Hey, thank you so much for tuning in to a new episode of Cut to Movies with Vivek and Viru. Just before we dive in, we'd like to give you a disclaimer that this episode is filled with spoilers. So please do watch the film first. Unless, of course, you don't have an issue with spoilers, in which case. Hello and welcome to another episode of Cut to with Vivek and Viru. And today we are in Indonesia. हम लोग ने एक कोरियन फिल्म की है. So we thought let's go to Indonesia and do something interesting. Vivek, tell us about this film. The film that Viru is talking about is The Night Comes For Us. It is directed by Timo Jajanto. The Night Comes For Us is about this one gangster who goes by the name of Ito. He suddenly develops a conscience towards saving the life of a little girl, and he wants to protect her at all costs from this notorious triad crime family. This Kill Bill meets Raid Redemption is a feast for action fans. And I can totally imagine Tiger Shroff and Hrithik Roshan remaking this film and naming it War 2. No, I didn't think of it that way, but yeah, now that you say it, this is a perfect film for Tiger Shroff at least to just lift and do. And ऋतिक रोशन के लिए बड़े भैया और छोटे भैया परफेक्ट हो गया. वॉर 2 के लिए तो परफेक्ट है बॉस. कैसे आइडिया दे दिया तूने. अभी तो लोग उठा ही नहीं. जब मैं फिल्म देख रहा था तभी मुझे लगा कि this is one veteran old guy suddenly becomes the good guy, and now the other newbie who was always looking up to him. It is so much war. Like आपने war देखी है ना, वो सिद्धार्थ आनंद की पिक्चर. थोड़ा पुराना पिक्चर होता तो जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर होता इसलिए. तो कैसी लगी आपको पिक्चर? बच्चन और शशि कपूर. ये तो और. Oh man. So I mean see वो why did I watch it? मतलब पहले तो मेरे को मिला कैसे ये फिल्म मैं बताता हूँ. Obviously I was just looking for ऐसे films and उसको मेरे को वो कैरेक्टर दिख गया from Raid the Iko Uwais, and I was like अगर ये है तो मतलब एटलीस्ट क्रेजी एक्शन रहेगा इसमें. ठीक है. सो दैट वाज द पॉइंट. एंड देन आई रेड थोड़ा सा. मैं रिव्यू देखता हूँ पहले रॉटेन टोमेटोज वगैरह पे ऐसे ही देखने के लिए कि क्या है. एंड द कंसेंसस वाज लाइक ब्रॉडली वेरी गुड. ठीक है. तो आई थॉट ठीक है ये तो देखना ही है. तो दैट इज हाउ आई लाइक डिसाइडेड टू वॉच दिस फिल्म. जब मैंने शुरू किया था रेड रिडेम्पशन का एक्चुअली प्लॉट भी थी नहीं है. मतलब वो फिल्म मैं एक्चुअली प्लॉट के लिए नहीं देखता हूँ. I just watch it for action set pieces. तो यहाँ पे भी मैंने वही सोचा. तो I frankly wasn't looking for any character or development or a story or whatever, which turned out to be कुछ है ही नहीं पिक्चर में. एकदम ही. It is all about the action set pieces के बीच में कुछ तो स्टोरी डालने की कोशिश करते हैं वो लोग. And the action is basically this form called Pencak Silat, right? वो एक साइलैट और पेंचैक साइलैट करके इंडोनेशियन है. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स इज all other martial art forms basically have this whole self development spiritual aspect to it, right? Karate लो, judo लो. हाँ, तो उसमें वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट रहता है, डिफेंस के लिए रहता है, वो सब रहता है. पेंचैक साइलैट is all about violence. Okay. So the martial art form is like all about violence. I was basically watching it for the mayhem and the gore fest. But mayhem, actually gore fest, I was not ready for the gore fest. I didn't know कि इसमें इतना खून खराबा होगा. And you told me also on message that you had to take a break from it in the middle before continuing to watch it, right? Right, because वही मेरे को ऐसा लगा कि वो क्या होता है ना, फिल्म का भी ऐसा होता है, टेम्पो होना चाहिए, थोड़ा सा होता है, फिर कम होता है, फिर कहीं पे इधर ब्रीथिंग स्पेस होता है. यहाँ पे मतलब ऐसा है कि इधर इट इज लाइक अ एकदम मैड एक्शन सीक्वेंस व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक अ कार्टूनिश ओवर द टॉप काइंड ऑफ अ एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई मतलब तुम यू शुड जस्ट लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड लिटरली एंड फिगरेटिवली. Correct. And watch that sequence. It's like एक वो मजा करते हैं ना, ऐसे बच्चे लोग बैठ के सोचते हैं अच्छा अभी ना इससे मारा है तो अब इससे मारो,
अभी इससे मारूंगा, अभी इससे आग फोड़ूंगा, ऐसे टाइप का वो बैठ के लिखता है ना, वैसा टाइप का लिख के वो किया है. हड्डी मिलेगी, हड्डी को तोड़ के फिर मैं इधर घुसाऊंगा, फिर उधर घुसाऊंगा, फिर ये ऐसे करके मतलब वो लोग ने लिखा. दैट वाज व्हाट लाइक केप्ट मी इंटरेस्टेड. और उसके बाद में बीच में कुछ भी नहीं होता था. लाइक ये एक्शन सीक्वेंस हुआ, उसके बाद एकदम ही बोरिंग, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम स्लो चल रहा है. और 2-3 एक्शन सीक्वेंस के बाद मुझे लगा कि हो गया यार, फिल्म खत्म हुआ क्या. बट वो 1 घंटा भी नहीं हुआ था. तो I mean that is why I took a break. I took a break and then उसके बाद I watched it again. I couldn't watch it at one go. What about you? For me, when I was watching the film, it did remind me of Raid, of course, apart from the same actor. The whole build up to saving the girl at all cost, and everything else is action. And in Raid, it was reaching the top floor, and everything else was action. Right. But when I was watching Raid, the action sequences of set pieces, the way they were choreographed, and the production quality of it, I think was much far superior as opposed to this one. Because even when they were breaking bones, or when they were breaking each other's jaws, etc., वो आपने सही बोला. जैसे it's very, the action set piece was designed in a certain way that the sounds of it, the way they were shot, where the legs were breaking or the arms were, the kneecaps were kind of bursting, उसमें ऐसे sounds थे और उसको ऐसे shoot किया था. It felt almost like for effect that इसमें लोगों को स्क्वर्म करवाना है, ये वो शॉट है. so I was feeling that, and plus I thought, मतलब पता नहीं if I'm being too harsh, but I thought even the actors who were performing these stunts weren't really good at doing it. Like Kill Bill, for instance, that a lot of scenes reminded me of Kill Bill. Yeah. Not just the ones where the women were fighting each other, but a lot of other scenes, the way they were, the aerial shots, the camera movements. Also the scenes where बहुत सारे जन आ जाते हैं to fight one or two characters, that kind of a thing. Yeah. So, but even in those scenes now, Viru, it was still feeling a little cheesy. When the actors were suddenly kind of fighting, especially that guy who was a drug addict and he was like a really strong guy suddenly. I don't know, but there were a lot of things that didn't feel right to me. But having said that, like you're saying, now that you said that action, the style of martial art, which is all about extreme violence, it makes a lot of sense now. And I think, I am that kind of a viewer. I don't read all of this before I watch the film, so maybe I don't have that context. But if directors or filmmakers would put that context somewhere, right, in the film, that this triad family follows this, I don't know, form of martial art, it would just make so much more sense to me. But triad को तो पूरा कचरा ही किया है. मतलब triad तो छोड़ दे, वो तो बेचारा इतना notorious gang है वो triad. इतने सारे फिल्म में उसके बाद होता है, बट यहाँ पे उसका कचरा किया है. Seven Seas, क्या था? 6 Seas. And that boss reminded me of Crime Master Gogo in some of the scenes. मेरे को लग रहा था अगर if you had to remake it, वो जो इसका डायरेक्टर है ना, अच्छा ये वाला रे, स्टैनली के डब्बे वाला. अमोल पालेकर नहीं, अमोल गुप्ते को ले सकते थे उसके वो सीन उसके लिए. Yeah, he was that Gunda in Kamine also, na? Right. वो Kamine. Correct. This is the kind of film probably Vishal Bhardwaj can also make. But anyway, so I was thinking कि इसमें obviously वो character वगैरह का तो सब बकवास ही था. इसमें एक डायलॉग था which kind of sums it up, which says that दोनों लड़की लोग फाइट करने वाले होते हैं या ऐसे कुछ होता है, and that lady says I'd love to talk some more but let's kill each other instead. Yeah. तो मतलब ऐसा डायलॉग वायलॉग भी ऐसे ही है कि हाँ, this film is about that, and he's like created different kinds of these set pieces, right? एक मीट शॉप में उसने वो क्रेजी फाइट जहाँ पे खून ही खून है सब जगह पे. Yeah. Then there is this whole almost
कार्टूनिश फ्लैट वाला सीक्वेंस जहाँ पे वो वाइट बॉय बॉबी और वो जो दूसरा बंदा है फेथ, वो फेथ, तो वो दोनों का सीक्वेंस है विच रिमाइंडेड मी ऑफ दैट टैरेंटिनो फिल्म आल्सो, जिसमें बहुत सारे जन आ जाते हैं, तो दे क्रिएट लाइक एन ऑलमोस्ट, ये फिल्म में भी ऐसा होता है ना, एक एक करके ही आते हैं और उसके लिए वो दे क्रिएट सम काइंड ऑफ अ डोरवे और समथिंग जहां से एक एक करके ही आ सकते हैं, एंड समहाउ दे आर एबल टू ओवरपावर हंड्रेड्स ऑफ मेन। तो वो कार्टूनिश फाइट था। देन जो एक मैंने इंटरेस्टिंग पढ़ा, वो ये सारे डिजाइन करते हैं ना ये लोग सोच के, सो इको ओवेस इज द स्टंट कोरियोग्राफर ऑफ दिस फिल्म, ही इज द एक्टर एंड द स्टंट कोरियोग्राफर। तो हाँ, तो उसने जो लास्ट टू, इफ यू लुक एट द लास्ट टू सीक्वेंसेस आल्सो, द लास्ट वन इज एक्चुअली प्रोबेबली द मोस्ट रियलिस्टिक एंड मोस्ट रेड रिडेम्पशन स्टाइल ऑफ फाइट, राइट? क्योंकि वो दोनों करते हैं। अब पूरे फिल्म में वैसा टाइप का फाइट होता तो मे बी दिस फिल्म वुड हैव बीन बेटर, बट उसके पहले वाला जो शूट किया था, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ टैरेंटिनो-ish वन, द गर्ल्स, 3 गर्ल्स वाला, बिकॉज उसमें वो लोग ने यूथफुल कलर और वो सब यूज किया है। तो उसका कहने का मतलब था कि इमोशन के हिसाब से किया है। वो जो गर्ल्स वाला था उसमें दे ही जस्ट केप्ट इट स्टाइलाइज्ड बिकॉज द 2 विलेन्स वर, वो जो लेडी विलेन्स वे वो भी स्टाइलाइज्ड थे स्टार्टिंग से। एंड दिस मिस्टीरियस लड़की का भी कोई मतलब ऐसे ही अचानक आती है, वेरी कन्वीनियंटली सेव करके गायब हो जाती है, एंड उसका कुछ मतलब नहीं समझता है इसका, बट वहां पे भी वो फाइटिंग करती है, वो दोनों को हरा देती है। दैट इज स्टाइलाइज्ड, उसमें भी ऐसे शैडोज कलर्स यूज किया है। एंड द लास्ट सीन, द लास्ट फाइट इज एक्चुअली एन इमोशनल बैटल बिटवीन 2 फ्रेंड्स, so that is why it is more like wo weapons come and more hand to hand and more personal, even the cameras are like एकदम सर के ऊपर से या ऐसे कुछ एकदम पर्सनल लगता है वो शॉट। तो वैसे तो they think about all these fights, but like you said, maybe it's the budget or whatever, the actual impact doesn't come, or it feels a little cartoonish or set up, like उसमें वो जो वो फ्लैट वाला जो सीक्वेंस था जिसमें लोग आते, वो तो एकदम सेटअप लग रहा था कि अच्छा ये आदमी आएगा यहाँ से, मैं इसको उठा के फेंकूंगा, फिर वो वहां से आएगा, उसको उठा के फेंकूंगा, फिर ये इधर मुझे मारेगा। और जब भी कोई विलन वो लोग को मारता है, इट इज ऑलवेज जस्ट अ स्लैश होता है, बट ये लोग जब मारते हैं तो घुस के अंदर से अंतड़ियां बाहर आ जाती। सो आई मीन इट्स ऑल वेरी कन्वीनियंट, बट इट्स फन यार। मेरे को तो मतलब ऐसे देखने में ऐसा इट्स लाइक अ गेम, राइट? वो जो गोर वाले गेम होते हैं या पॉइंट एंड शूट या वो फर्स्ट पर्सन वाले गेम रहते हैं, वैसा टाइप का ऑलमोस्ट अ कार्टूनी फील टू द एक्शन। तो वो सो दैट वाज इंटरेस्टिंग, बट या एज अ फिल्म अगर सारे बीच में के सीक्वेंसेस निकाल के एक एक सिर्फ फाइट सीक्वेंसेस होते तो मे बी इट वुड हैव बीन बेटर। Once one of the scenes where the little girl is in the car, right, और वो पीछे से आदमी घुस के आता है, मतलब and she gets so annoyed that she also takes a one of those screwdrivers और घुसा देती है उसके फेस पे। I was like, बस यही बचा था देखने को कि वो बच्ची भी उठा के अभी उसमें इको को शूट कर देता है, ऐसा वो दिखाया। Obviously it was very obvious that वो वापस आएगा। I've seen like gore films, like इसमें अगर if you see एक डायरेक्टर है ताकाशी मिके, who's like yeah, of course. हाँ, है ना, पाप ऑफ जापानीज एक्सप्लॉइटेशन सिनेमा करके होता था ना, जिसमें देयर वाज लाइक गोर, वो क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड्स से मारे। आई थिंक इवन टैरेंटिनो इज लाइक इंस्पायर्ड बाय ताकाशी मिके, बट ताकाशी मिके स्टार्ट्स वेयर टैरेंटिनो लाइक स्टॉप्स गोर के मामले में। हाँ, टैरेंटिनो जिधर तक दिखाता है वहां से वो शुरू करता है, फिर वो अलग लेवल पे लेके जाता है। लाइक आई हैड सीन दिस फिल्म व्हिच काइंड ऑफ ब्लू माय माइंड। आई थिंक वो पहला फिल्म देखा था ताकाशी मिके का, व्हिच वाज दिस क्या, इची द किलर। इची द किलर, या एंड उसमें एक तो इट्स हाइपर स्टाइलाइज्ड, एंड वो जो कट करता है, मतलब उसमें ऐसा स्वॉर्ड लेके जाता है, एंड इट्स लाइक द ब्रेन, ऐसा मुंडी कट होता है और वो ऐसा ब्रेन स्लाइस होके नीचे गिरता है, एंड आई वाज लाइक ओ मैन, क्या सीक्वेंस है। तो ये लोग ने भी कोशिश किया है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट लेवल, इट्स नीदर स्टाइलाइज्ड और नॉट, बट इट्स फन। इट्स लाइक किड्स डूइंग दैट थिंग with a lot of gore, blood, with fake blood in and fake body parts with them. Yeah.
It's almost laughable. Some of the sequences almost that. Like you said, Takashi Miike, if you watch the films also, you may not even squirm when you see the mundi getting cut or sliced, perhaps. When Uma Thurman slices off Lucy Liu's skull in Kill Bill, in that snow, it's such a stylish shot that you just don't see even blood feel. spatter on the snow. Yeah, and you still watch that film without actually squirming in the seats. Right. I think that's what I mean. Maybe right now we are talking like that in retrospect after being these great fans of Tarantino, but yeah, I mean, this film was not. We should not be so harsh. Actually, this film was not like so bad. No, it's fun. It's fun. It will make you squirm, and I think it is designed that way. Maybe, it is designed that way. वही बोला ना कि अच्छा नेक्स्ट में उसको कैसे आई मेक यू शिफ्ट इन योर सीट कि ये ना इसके आंख में से घुसाएंगे और बाजू में से निकालेंगे ऐसे करके मतलब दैट इज व्हाट देयर इंटेंट वाज लाइक दैट लेडी उसका जब उंगली ऐसे निकाल के वो काट के फेंकती है और उसके वो कैमरा टर्न होता है एंड देन यू सी उसका गट्स बाहर आ जाता है दूसरे बाहर आ जाएगा. So I mean that is what it's all about shock value. Yeah, some sequences War 2 nice. would be like that. War 2 में तो गाने और लव स्टोरी एंगल सब होगा तो of course it will not be, but I think उनका जो core story है ये दोनों actors का I think that can be taken ahead in War 2 for sure, but hope they don't remake it. एंड के हिसाब से तो इमरान हाशमी की भी पिक्चर हो सकती है. But वो लियोन द प्रोफेशनल का भी एंगल आ गया था ना वो बच्ची को बचाने के लिए. एब्सोल्युटली वो बिच्छू याद आ गया मुझे बॉबी देओल और रानी मुखर्जी. सनी पाजी और बॉबी पाजी के साथ भी बना सकते हैं. Oh yeah, real brothers. Yeah. कितना सारा हम लोग ने हिंदी का ये दे दिया अभी. Please. Yeah, अभी directors are listening out there. Do it. We watched a lot of gore in the last 2 weeks now. I think we need to the next week. I think people should give us a reco of something which is a little less violent. Maybe it's like a love story. We've not done a love story yet. Oh yeah, romantic film. Let's explore that. Yeah, or a comedy, out and out comedy. That we need to kind of explore. We've been talking about it for the longest time. Right. So please, anyone who's listening, recommend some nice romantic films or a comedy, and we would love to talk about that. And if you have seen The Night Comes for Us, tell us what was your reaction? How interesting did you feel the film was, or the sequences were? And yes, do follow us on our social media channels and on Spotify. Yes, please follow us on Spotify. I can't stress on this enough. Just open your Spotify app, look for Cut to Movies, our podcast channel, and just press the follow button. Please, and recommend some films so that we can invite you to have a chat with us. Bye.